So today we are going to be looking one of the most important topic, that is hook, and also under hook we are going to be covering use state majorly. So use state is a hook that allows us to have state variables and functional components. So जैसा कि आप लोग जानते हैं कि React में सिर्फ दो तरह के components हम यूज करते हैं या बना सकते हैं, वो हैं class based components जो classes यूज करते हैं and based on constructor, and दूसरे हैं functional components which are dependent and majorly created using functions. So ये जो hooks हैं जैसे कि use state, use effect, ये सब हम functional components में ही यूज कर सकते हैं. तो अब मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बेसिक काउंटर एप्लीकेशन बनाऊंगा, उसके थ्रू आपको हेल्प करूंगा. और आपको बस ये बेसिक कमांड चलानी है अपने डेस्कटॉप पे, npx create react app. मैंने अपने ऐप का नाम काउंटर ऐप रखा है एंड प्रेस एंटर. सो मैंने बेसिकली पहले से ही बना रखा है अपने लिए काउंटर एप्लीकेशन. एंड टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लाइक हाउ वी आर गोइंग टू राइट अवर कोड. सो पहले npm start लिखते हैं and it will start our app. So finally, after hitting npm start, our dummy React project template is running. You can see the here the React logo and all. And let's start with the basic counter app. I'll be removing this header, and we also don't need this logo. And in here, I will be creating two buttons. First is for incrementing the counter. Second is a span which will contain the initial counter value, and another button is for decrementing the count, that is minus, and we are going to save it. So after saving it, you can see that you will be getting this kind of screen with an increment button, decrement button, and the initial counter value. Okay, and after that we'll be like importing React from React if it isn't added into the template, and also the use state will be coming from React, that is use state. Okay, so this use state contains a value, like an initial value, I would say. So we'll be this is the basic syntax of a state set state. Okay, and in here we have use state. So this use state, in the scope we can declare the initial value of this variable, that is state. So if I type over here 4, then the value of this state, if I console.log state, so the initial value of this state, so इसकी initial value होगी state की, वो अब 4 print होगी. वो हम देखते हैं. inspect console, you can see that 4 print हो रही है. अब अगर हम इसे change कर देते हैं to 6, तो ये 6 print होगी. ये 6 आ गई. ओके, सो ये हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू. और सेट स्टेट जो है, ये एक हमारा फंक्शन है जो हम जिससे हम सेट कर सकते हैं इसकी इनिशियल स्टेट को, या चेंज कर सकते हैं. अब मैं मान लो अगर सेट स्टेट करता हूँ, मुझे इसकी इनिशियल वैल्यू को चेंज करना है या इसकी प्रीवियस वैल्यू को चेंज करना है, तो मुझे सेट स्टेट में वो पर्टिकुलर वैल्यू पास करनी होगी, तो वो उससे चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूँ. ये स्टेट जो है, ये करंट वैल्यू ऑफ द स्टेट एट एवरी आइटरेशन. और जो ये सेट स्टेट है, इट इज अ फंक्शन फॉर सेटिंग और चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल. आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ. So now let's make a increment button over here on the on click. Oops, on click and increment count. I will name this function as increment count. Let's remove this console.log, and I'll be declaring a function increment count, and in here I will be calling my set state, and I will be, see, this is the state. I will type state. This is the current value because I want to increment from the current value of this. So state plus 1. So when we will click on this plus button, so you can see that it will increase our value. Oh, we need to pass that initial value over here, so state will be passed over here. And now when we will click on this, you can see that it is getting increased. Okay, similarly
we can create for decrement. Decrement count, and we will be passing this on click of this, and here we will be passing minus. So on click of this, it will be decreasing our counter, minus minus minus. So there is one more thing. For example, if I in the next line I again call this, now what will happen? What will it show to us? Let's try. Let me refresh it. You can see that I am calling set state 2 times, then it should increment by 2, but it is not doing because it is being called only 1 time and it is taking the reference from this initial value only. No matter how many times I call inside this, तब भी ये एक ही बार कॉल होगा, एक ही बार अपडेट करेगा. तो अगर मुझे ये बार बार मतलब इसके रेफरेंस से करनी है अपडेट, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए एक तरीका है. हम यहाँ पे प्रीवियस स्टेट पास कर देते हैं. प्रीवियस स्टेट मतलब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट बेसिकली हम हमेशा प्रीवियस तो रखते ही रखते हैं. नेम स्टार्टिंग जो उसका नेम होता है वेरिएबल का, प्रीव हमेशा नहीं आना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है. और यहाँ पर हम फिर एक एरो बनाएंगे, प्रीव स्टेट +1. ठीक है. अब मैं अगर इसे करता हूँ तो देखो सब कुछ बिल्कुल सेम चलेगा. एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. प्लस 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 सब कुछ सेम हो रहा है. अब मान लो मैं इसे एक बार और बना देता हूँ, तो और मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरा 2 बार इंक्रीमेंट हो, तो अब देखो +2 +4 +6 ऐसे चल रहा है. तो प्रीवियस स्टेट क्या हो गया हमारा, ये रेफरेंस लेता है. अगर मान लो मेरी यहाँ पर स्टेट अपडेट हो गई है, तो प्रीवियस स्टेट ये उसे मानेगा. यहाँ पर अगर 4 हो गई है तो ये 4 को प्रीवियस स्टेट मानेगा. बट अगर हम जब ये यूज़ कर रहे थे नॉर्मल स्टेट, तो इसे पता ही नहीं था कि प्रीवियस स्टेट क्या है नहीं, क्या नहीं है. ये हमेशा इसका ही रेफरेंस ले रहा था. तो इसलिए हमेशा हमें प्रीवियस स्टेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके. तो इसी को ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ. ओके. और ये हमारा बिल्कुल सही से वर्क करेगा. ओके. So I hope everyone is clear with this topic use state, and if you like our content, kindly do follow our channel and hit the subscribe button so that I can bring such amazing videos for you in future as well. Thank you so much.